Bismillahirrahmanirrahim. So we are basically going with our chapter that is the gas chromatography. उसमें हमने basics explain किया था और बहुत ही concise manner में. I believe कि उसमें enough information है for any the objective type exam or short answer type exam. उसके बाद हमने उसमें एक concept आया था columns का कि columns जो हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं, जैसे हमने HPLC पढ़ा था, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसमें नॉर्मल कॉलम्स थे, जस्ट ग्लास टाइप कॉलम्स थे और उससे आप मटेरियल पैक कर सकते हो. यहाँ कॉलम्स स्लाइटली डिफरेंट है और कॉलम्स द गैस क्रोमेटोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजुअली कंसाइज में उतना तरह मिलता नहीं. तो कॉलम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए द गैस क्रोमेटोग्राफी will explain in a different manner. We'll try to understand that to understand the column is that we'll understand one thing, that is the temperature. क्योंकि जो temperature यहाँ पे होता है, column यहाँ पे heated column use करते हैं हम chromatography में, gas chromatography में. So we'll see, understand the temperature based. So one is the temperature, the concept of temperature. And second, we'll try to understand these columns based on the structure. ये column जो column के अंदर जो packed material रहता है, overall this column walls, column material and the structure is packed inside. So we'll try to understand its structure. So there in both these headings we'll try to cover up the major portion, जो main points है columns में. Temperature की जो बात है, जैसे मैंने कहा कि gas chromatography में जो column है, that is a heated column. So we use heated columns. So heated columns. यानी बेसिकली वो ओवन में कनेक्टेड होता है, यानी दैट इज हैज एक्चुअली द टेम्परेचर कंट्रोल. सो इट्स द कॉलम इज एक्चुअली इट हैज ओवन विथ इट, सो देयर इज अ टेम्परेचर कंट्रोल. तो ये जो हीटिंग होती है दैट इज यूजुअली डन इन टू वेज. वन इज दैट्स कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग. आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग. And the second one is that's called as so it's isothermal. So it's like the isothermal temperature constant. The second type of programming that's called as so this is one that's isothermal programming. So where we have, as the word suggests, we are keeping the temperature of the column constant. नहीं, अगर हमारा ये column है, इस कॉलम का टेम्परेचर जो है, जो भी मटेरियल इसका पैक्ड होगा, दैट विल डिस्कस लेटर, तो इसका जो टेम्परेचर इस कॉलम का थ्रू आउट, सो दैट विल बी कांस्टेंट. दिस कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग. एंड इन आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग, सो वी शुड से दैट सो द कॉलम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. दैट मीन्स अब यहाँ से इल्यूअर्स भी आते हैं, यहाँ से आपका सैंपल भी आता है, दैट्स गेटिंग सेपरेटेड. थ्रू आउट द प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक. सो अब यहाँ केस है, जैसे मैंने कहा था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग वो सैंपल्स यूज करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, दे लो बॉइलिंग पॉइंट्स. तो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सो इन आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. एंड इन दिस केस अगर हमारा जो सेपरेशन में ये वाला प्रोग्राम यूज करेंगे, हम ये वाला टाइप प्रोग्राम, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग. थ्रू दिस प्रोग्रामिंग वी कैन सेपरेट the samples. We can separate, so those samples can be separated, are those molecules, are those chemical species जिनमें हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनका जो रेंज है, यानी मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग रेंज है, that boiling range that should be the narrow. तो boiling range जो है that should be narrow. What do you mean by that? यानी boiling range should be narrow. क्या मतलब? Means अगर हमारे पास एक सैंपल में, for example, you have 5 molecules which have to be separated. If the temperature boiling point is closer, इसका close. So that means we should say their boiling range is narrower. So these type of samples we prefer to use isothermal programming. So isothermal programming में हम लोग boiling range जो है that it's suitable for the samples where the boiling range is narrow.
Likely we have another type of जो हमने कहा था कि ये जो heating का जो mechanism है, that's called as the temperature programming. So this is isothermal programming. Second is temperature programming. Temperature programming. As the word says, यहाँ पे temperature constant था, यहाँ पे temperature is not constant. What we do is हम लोग continuously जो है temperature vary करते हैं. So continuously the temperature is varied. With the help of software हम temperature को या दो steps में vary करेंगे या continuously throughout the separation the temperature of the column varies. Whereas in isothermal the temperature was constant throughout the process of separation. यहाँ पे temperatures जो है vary कर लेते हैं. And then जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम लोग वो molecules separate करते हैं जिनका boiling range narrow रहता है और यहाँ पे when we have the boiling range which is broad या wide boiling range. Wide. That means the temperature when the molecules they have sample में जो हमारे पास molecules chemicals है species है जिनको separate करना है उनका जब temperature जो है very different lot of differences they have and they have various types of boiling points. So the method is suited to separate a mixture with a broad boiling range, while as in this case it is suitable to separate the mixture which has a narrow boiling range. Any boiling points उनका बहुत close है सबका ज़्यादा difference नहीं boiling point में. यहाँ they have many different types of boiling points. So this is the basics about the temperature as far as the column is concerned. So दूसरा point that is the structure of the columns. जहाँ तक structure की बात है तो columns जो है उनमें structure की बुनियाद पे they can be यानी that means we have the columns can be divided into number one. So one classification that's called as the support coated columns. So that's called support coated column. Second type of support coated columns it can be second category of columns that can be the wall coated columns. Wall coated columns. So we're actually trying to understand the columns and their different types based on the structure. And then it can be that is called as the packed columns. जो मैंने कल भी पिछले लेक्चर में बोला था most commonly used packed columns. जो हमने basics explain किया था gas chromatography that was the packed columns. और mainly जो है ये दो columns that is the support columns and wall coated columns. It's basically एक ही category उसी category के दो types है. So our columns can be packed columns most common. So packed columns most common. So they're most commonly used in the gas chromatography. And then we can have support columns, we can have wall coated columns. And these two columns, इनका जो structure होता है ये दो का support coated columns or wall coated. Sometimes it is written as SC support coated, it's written as WC. तो ये जो दो type columns हैं इनमें columns they are like tubes. Columns जो है they are like the tubes. ठीक और ट्यूब्स हम जानते हैं उनका they are we can say they are like tubes or capillaries. Tubes are the capillaries. These tubes are small capillaries. Columns जैसे मैंने कल भी कहा था कि coiled capillaries type columns gas chromatography में usually. So support coated columns or wall coated columns they are like tubes and capillaries small जिनका diameter होता है pore size बहुत small capillaries. That is why this support coated column and this wall coated column they are together categorized as the tubular columns. So they are categorized as open tubular columns. So basically, as far as the columns are concerned, the columns can be open tubular columns
एंड पैक्ड कॉलम्स. और पैक्ड कॉलम्स में चूंकि स्मॉल ट्यूब्स नहीं होते, उनका डायमीटर लार्ज होता है हियर. So here we have the columns where diameter is larger. So here, so that's why that's not called tubular column. So our columns can be either open tubular columns, tubes, small size, small diameter or small radius. So they're like capillaries. So that can be open tubular columns or packed columns. Open tubular columns can be wall coated or support coated columns. Now, what is wall coated? What is support coated columns? सपोर्ट वॉल कोटेड कॉलम्स में क्या होता है, जो आपका ये जो कैपिलरी और ये जो ट्यूब होता है कॉलम का एक हिस्सा हम लेते हैं यहाँ पे, उसमें ये जो वॉल होता है अंदर का वॉल, ये जो वॉल अंदर का, मैं एक फ्रेगमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो अंदर का वॉल होता है इट्स कोटेड विद अ थिन मटेरियल, अ थिन लेयर ऑफ अ मटेरियल. So it is coated with a thin layer of a material. That's why it's called wall coated. It's internal wall that's coated with a thin layer material of diatomaceous earth. एक मटेरियल होता है और यूजुअली डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स. डिराइव्ड फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन जनरल. मैंने शॉर्टकट में बोल रहा हूँ. सो वॉल कोटेड कॉलम जो कि मैंने बोला इट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स. इसको वॉल कोटेड इसलिए बोलते हैं एज द नेम सजेस्ट. उसका इंटरनल वॉल जो है इट इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल डायटोमेशियस अर्थ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइटोप्लैंक्टॉन्स. एंड देन वी हैव सपोर्ट कोटेड. सपोर्ट कोटेड भी सेम होता है. इसमें अगेन दे आर थिन, दे आर द स्मॉल डायमीटर बेस्ड ट्यूब्स और कैपिलरीज. पहले इनका जो है इंटरनल कोटेड विद द सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल, लेकिन इस कोटिंग के बाद देन इट्स वी हैव सम लिक्विड एब्जॉर्ब्ड हियर, जो मैंने कल बोला था लिक्विड एब्जॉर्ब्ड हियर. Usually some poorer liquids like silicon oil जिनका boiling point high हो. So that's some liquid absorbed. That's called a support column. So tubular columns can be wall coated column which is actually coated with the diatomaceous earth, and can be support coated column which is once coated with the diatomaceous. It's also we have that liquid on absorbed on that. Fine. And the packed columns most important. So मैंने कहा इसका diameter बहुत larger होता है, and then as the word says is packed. This is completely packed. It's completely packed with the material. It's completely packed with the material. Diatomaceous earth, completely packed. और जितनी पैकिंग बेटर होगी उतना सेपरेशन एफिशिएंट होगा. So it's completely packed with the diatomaceous earth material, and then as का डायमीटर भी बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा सेपरेशन का इश्यू आ जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है. That's why these columns are usually less efficient. Around they have 50% efficiency compared to these tubular columns, which is wall coated or supported columns. और उसमें इशू ये भी आ जाता है, एफिशिएंसी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि डायमीटर ज्यादा होता है. विद द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज जो है बेसिकली दोज इम्प्योरिटीज they actually occupy the sites inside the diatomaceous earth, or we should say that basically the packing is getting deactivated over the period of time. So that's why unki efficiency jo kam hoti hai. So this is all about the in general the basics of the columns in the chromatography. We have talked about their temperature and we have talked about their structure. Then we have their tubular and the packed columns. मैंने बहुत ही concise manner में इसको लेने की कोशिश की है यहाँ पे. I hope that it fulfills enough information for any the basic PG level, BSc or later exam. In case you have any more confusion, please contact here makantchem@gmail.com.